So guys, welcome back to another episode of Revved and Recorded. अभी हम जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेलमेट काफ़ी टाइम बाद हम आ चुके हैं वीर रॉयल एनफील्ड शोरूम वी मोटर्स एंड मेरी बाइक गई है अभी सर्विस होने के लिए. सो जस्ट गोइंग डाउन द स्टेयर्स. यहाँ पे as you can see my bike over there. So this is basically the second service जो कि आपके अराउंड 5000 किलोमीटर्स पे होती है एंड इसमें आपका जनरल ऑयल चेंज टॉप अप वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें होती है. एयर फिल्टर क्लीनिंग ये सारी चीज़ें आप जैसे कि देख सकते हैं. भाई आपका नाम? धनराज जी. आज आप हमारे बाइक पे काम करने वाले हो. बाइक बढ़िया मोड करवा रखी है. पहले तो आप ये बताओ. बढ़िया. सो इसमें बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि स्पोक वाले मॉडल में वो कॉमन है ये वॉबलिंग इशू. तो ये वॉबलिंग इशू जो है इसको सही करवाने के लिए अब देखते हैं क्या करा जाएगा. स्पोक्स टाइट मैंने रिसेंटली करवाए थे. सो ये सारे स्पोक्स को टाइट करवाया गया था और अलाइनमेंट वगैरह अब करवाई जाएगी. लेट्स सी. इसमें एयर फिल्टर जो डला हुआ है वो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है तो उसको क्लीन करके बस वापस से डाला जाएगा. बाकी ये टेल लाइट बड़ी डिफरेंट कर रही है. मैं मोटोकॉम स्टोर वापस जाऊंगा और इसको ज़रूर चेंज करवाऊंगा. तब तक लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी सम न्यू बाइक्स. Take a test ride of this beautiful machine. Let's see कि ये Himalayan 411cc के वेरिएंट की तरह ही परफॉर्म करती है कि नहीं. How comfortable it is and what people are talking about, like about the power, the performance delivery of this machine. क्या ये सही में वैसा है कि नहीं हकीकत में. So let's just go ahead and check that out. जब तक मेरी बाइक सर्विस होकर रेडी हो जाएगी तब तक let's just do some good number of twisties and everything on this bike. Baki, let me just tell you a bit more about this beautiful machine. So Himalayan 450 was launched towards the end of 2023, as you would already know. This comes with a 452cc engine which delivers about like 50 Newton meters of torque at 8000 RPM. Weight around like 196 kilos, near about like Interceptor. But look at this, like company ने अभी LED indicators and everything यहाँ पे दिए गए हैं. I wonder where exactly is the tail light for this bike. I have no clue, but yeah, as you can see on the front, you get the same LED headlight setup, the same LED indicators, and look at this beautiful exhaust. 17-inch spoke rims on the back, just like the previous Himalayan, and the front comes with I think a 19-inch rim. Let me check. No, I think it's 21. Anyway, I'm just poor at this. But I'll just do like a quick test ride of this and then talk to you a bit more about my experience. How was this bike? Guys, I didn't get the GoPro today because मैं Royal Enfield का वो वाला helmet पहन कर आया हूँ, so I don't have any mount attached to my helmet today, so I wouldn't be able to give you a POV shot. but would share my experience and definitely the second service cost of my Interceptor 650 with you guys. Let's go in this one.
compared to Himalayan 411. I have one thing to say. This is simply amazing. Like the comfort and all जो कि मैंने इस बाइक पे फील किया है. The seats are much more cushioned and they are very comfortable to sit for long rides. I rode this for about like 10-15 kilometers right now. I wasn't able to take a shot on GoPro, but this is simply amazing. जो वाइब्रेशन है वो इस बाइक में you feel around like once you start accelerating really heavily after 80-85 kilometers, you're on like 4th gear. तब वो थोड़ी वाइब्रेशन आती है, and that's I think something which is common in Himalayan 411 as well. But this is simply amazing. The whistling noise from this exhaust, from the engine, is simply amazing. And एक चीज़ तो मैं दिखाना भूल गया. This comes with UHD forks from Showa. So some good premium things out here. मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से क्या क्या parts अपने Interceptor पे लगा सकता हूँ. Like I really love these indicators. I'll try and see if I can fit them in. I really like the look of these. But all in all, it's a great bike. अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा सर्विस कॉस्ट मेरी बाइक का क्या रहा. सर्विस पूरा हो चुका है, हमने चेन पूरी लगा दी है. बट जस्ट टू लेट यू नो, सर्विस कॉस्ट इज वॉपिंग 500 rupees only. Cheapest service ever. So second service, which is a free service, एकदम cheap at 500 rupees. ये काफ़ी शॉर्ट ब्लॉग था. Now I'll be heading off to home. That's the Mathura road. I'll touch that road right now and go to my home. Until then, cheers. Take care.